Hello, welcome everybody to the next Facebook Live, ITS Indian Thyroid Society Facebook Live, happening every first of month from the last 3 months. So we have had a International Thyroid Awareness Month in the month of January 2023. That was a month-long awareness activity related to thyroid gland. As you know, we are having hormone experts, we have got subject specialists, we have got lot of stakeholders, including patients who participated in this program. So I think it is a very important that we all participate actively. So I should congratulate the Indian Thyroid Society for taking this forward and all the office bearers. So I think I am Dr. Mohanty Shenoy. I am working as a consultant endocrinologist in Sri Gokulam Medical College, Trivandrum. So let me welcome our president, who is Dr. Shashank Joshi, professor in endocrinology. He is senior consultant working in Mumbai. He has been the past president of Endocrine Society of India, also the RSSDI, as well as the Association of Physicians in India. So he has also held the hat of being the IDF South Asian chair. Welcome, sir. Good evening, sir. Welcome, sir. How are you, sir? I'm fine. So, Dr. Mohan, I must congratulate the mentor of this program, our immediate past president of the Indian Thyroid Society, Sarita Bajaj, madam. Who's the coordinator for this whole program, the entire team of Indian Thyroid Society and its office bearers, particularly Dr. Pramila Kanra, Dr. Arun Menon, Dr. Mini Pelle. And I think this, as Mohan said very rightly, today we have invited domain experts in the field of thyroidology. And these thyroid experts are from different fields, endocrinologists, endocrine surgeons, as well as nuclear medicine specialists. And they are going to educate you. I'm certain that whatever you will listen today, you will learn, and whatever you learn, you will adapt. And we are all here for a healthy India. We are all here to ensure that your health uh, with thyroid disorders is enhanced and improved. And the knowledge and wisdom which you acquire from this program will be useful for you for your day-to-day management of your disease. One disclaimer is that please ensure that you go to a healthcare provider after listening to the various question and answer sessions today. And I'm certain that this will be a very enriching and fruitful session. And I once again congratulate my elder sister, Didi, Dr. Sarita Bajaj, to start this initiative. And in my presidency, I'm going to continue the same. I have to thank my entire executive committee for continuing this initiative. And I have a special word of mention for Dr. Mohan Shenoy. And I must also thank the digital team and our sponsor from USV for continuing this initiative. So thank you so much. And I now hand the proceedings over to Dr. Mohan Shenoy and today's moderator and all our domain experts. Please accept my heartfelt congratulations. And I'm certain that we'll have a very, very lively, healthy, and a interactive session, which will enrich people listening to this show in a much better way. Thank you so much. Thank you, sir, for that kind words, and thank you for coming for this starting. So I think we have to go ahead with this today's program. Today we have got a panel discussion on thyroid nodules. हम आज thyroid nodules के बारे में बात करेंगे. हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार कोनों से experts. So the first, we have the moderator for the day, who is Dr. Tejasvi V. He is a consultant endocrinologist working in Kaveri Hospital, Bengaluru. He has worked as a senior resident in the Department of Endocrinology and Metabolism at AIMS, New Delhi. So welcome, Dr. Tejasvi. Over to you. Thank you, sir. Thank you, sir. So, as told by Dr. Mohan, sir, today's topic of discussion is regarding the thyroid nodules. So, thyroid nodules are the solid or fluid-filled lumps that arise from the thyroid gland, and in majority of the cases, they are asymptomatic and are incidentally detected. To shed more light on this topic, today we have three eminent panelists from three different specialties. First, I would like to invite Dr. Alpesh Goyal from Endocrinology, currently serving as Assistant Professor in Department of Endocrinology and Metabolism in AIMS, New Delhi. He did his MD in Internal Medicine and DM in Endocrinology from prestigious Institute of AIMS, New Delhi, and he has more than 75 publications in both national and international journals, and he has authored more than 12 book chapters to his credit. Warm welcome, sir. Thank you, Dr. Tejas. Next, I would like to invite
Dr. Arun Shasikumar from Nuclear Medicine. Sir is currently serving as Head of Department of Nuclear Medicine in St. Gregorius Medical Mission Hospital, Tiruvalla, and his areas of interest are nuclear oncology, thyroidology, and precision medicine. Warm welcome, sir. Thank you, Dr. Tejasvi. And third panelist for today's session is Dr. Chitresh from Endocrine Surgery, currently serving as Associate Professor in Department of Surgical Oncology in AIMS Bilaspur. He has more than 40 publications in both national and international journals to his credit. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much, Dr. Tejashi, for kind introduction. So, viewers, please post your queries in the comment section. It will be answered by our expert panelist. So, I would like to begin this session by asking first question to Dr. Alpesh. Sir, what are thyroid nodules and what are the common presentation? And please explain on laboratory investigation like thyroid profile and thyroglobulin measurement in the evaluation of the thyroid nodules. Good evening, one and all. Uh, Tejasvi, as you said, thyroid nodules are solid or fluid-filled swellings that are present in thyroid gland. We all know thyroid gland is presented in the anterior part of the neck. Thyroid nodules can present in different manners. So they can be noted by the patient as a palpable swelling, which is moving during swallowing movement when they swallow food, or it can be made aware by a third person that person is having a swelling and he or she should seek a medical opinion. They can also be detected on incidentally, basically on ultrasonography of neck, which is being done for some other purpose, or a CT imaging, which is being done for some other purpose. And as you said, incidental detection of thyroid nodules is increasing, and so it is important to be aware that which thyroid nodules require further evaluation. Rarely, large and invasive thyroid nodules can also present with compressive symptoms. For example, due to compression on nerves, they can present with heaviness of voice. They can compress on the food pipe, and then it can cause difficulty in swallowing. They can also compress on the windpipe, and then they can cause difficulty in breathing or difficulty in breathing while lying down. So these are major presentations of thyroid nodule, and you can also at times get symptoms of associated hypo or hyperthyroidism, something which has been discussed in previous panel discussions. Um, about your third question regarding the lab investigations that we usually perform. So, as a clinician or as an endocrinologist, we often investigate patients with thyroid nodule to look if there is any functionality. So, we do T3, T4, TSH, these are thyroid hormone profile, and to see if there is any hypo or hyperthyroidism. One important note that we make is that if TSH is low, then we definitely go for a nuclear scan, something that Arun sir will discuss in more details subsequently. And accordingly, we treat patient for hypo or hyperthyroidism. Also, you have talked about thyroglobulin. Now, thyroglobulin is a protein which is a protein, or we can say a hormone, which is produced by cells of thyroid gland, that is follicular cells of thyroid gland, and it is secreted in the bloodstream. Now, thyroglobulin is an important marker or is an important tumor marker in patients with thyroid cancers after they have been operated. But it is very important to note that it has got no role in routine evaluation of patients with thyroid nodules. So, preoperatively, we don't ask for thyroglobulin estimation in most instances. So, if I have to summarize in Hindi, I will say that थायराइड नोड्यूल्स बेसिकली गले में गांठ होती हैं थायराइड ग्लैंड में, जो कि ठोस हो सकती हैं या पानी से भरी हुई हो सकती हैं, और ये सारी गांठें जरूरी नहीं है कि कैंसरस हो, इनफैक्ट अधिकतर गांठें ये कैंसरस नहीं होती हैं. इनके प्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं. सबसे कॉमन तरीका ये होता है कि पेशेंट कोई गांठ नोट करते हैं खुद से, या कोई दूसरा आदमी उन्हें बताते हैं कि आपको कोई गले में कोई स्वेलिंग है, आप इसको डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए.
कभी कभी हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं या कोई सीटी स्कैन करते हैं किसी और कारण के लिए, तो संयोग से ये निकल जाती हैं और उसके लिए फिर फर्दर हमें एवेल्युएट करना होता है। कभी कभार बड़े थायराइड नोड्यूल्स जो बहुत बड़े हैं और दबाव डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पे, वो गले में खराश, हैवीनेस ऑफ वॉइस, फूड पाइप में कंप्रेशन की वजह से खाना निगलने में दिक्कत और सांस लेने में दिक्कत के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। जो हम टेस्ट एडवाइस करते हैं उसमें थायराइड पैनल होती है, थायराइड फंक्शंस जो हम कहते हैं T3, T4, TSH, वो ये देखने के लिए कि कोई फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल यानी कि कोई ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने वाली नोड्यूल तो नहीं है। ऐसी सिचुएशन अगर होती है, TSH लो होती है, तो हम एक न्यूक्लियर स्कैन एडवाइस करते हैं। और एक टेस्ट और जिसका जिक्र डॉक्टर तेजस्वी ने किया था, थायरोग्लोबुलिन टेस्ट, वो टेस्ट की जो अहमियत है वो खाली थायराइड कैंसर के पेशेंट्स में उनके ऑपरेशन होने के बाद है, जो कि डॉक्टर चित्रेश सर काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे सब्सिक्वेंटली। हालांकि रूटीन पर्पस में थायराइड नोड्यूल्स में उसकी टेस्ट की कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। So thank you, sir, for your detailed response on the presentation of the thyroid nodules. Sir, I also highlighted the role of thyroid profile, which is helpful to know the functionality of the nodule. And sir also told that thyroglobulin measurement is not having much of the role in the initial evaluation of the thyroid nodule. So my next question is to Dr. Arun Shashikumar, sir. So what imaging tools are commonly used for thyroid nodule examinations? Good evening, everyone. So Good evening. basically, now we have understood what a thyroid nodule is and what are the basic lab tests that are done to evaluate this nodule. So next comes imaging. Imaging is basically scans which we do to understand the nature of the nodules. So the most commonly used scan is the ultrasound scan. Ultrasound scan is done. It's a very simple scan. You have a probe that is kept right in front of the neck. It hardly takes around 3 to 5 minutes, and you get all the details of the thyroid gland. Basically, you understand whether there is any nodule present or not. If at all a nodule is present, what is the size of the nodule, what is the shape of the nodule, what is the character of the nodule, what is the texture, and whether there is any possibility that this nodule might be actually having any thyroid cancer within it. You can also understand that whether there is only one nodule or there are multiple nodules, and details of all these nodules can be obtained from a single ultrasound scan. As I said, it's a very cost-effective and simple test, hardly takes around 3 to 5 minutes. Now, this test is often ordered by a clinician only after examination of the clinical examination of the thyroid gland. If he feels that there is any nodule, then we do a ultrasound scan and see. So in ultrasound, we also have certain grading systems, where a score, where a number is given, like say from 1 to 6, to see whether what is the chance of this nodule to be harboring any cancer cells. So 1 means there is absolutely no chance, and from there it goes up to 2, 3, 4, 5, and 6 means there is definitely going to be a thyroid cancer. So ultrasound is a very useful imaging tool that helps to understand most of the things of a thyroid nodule. Now, secondly, we have a CT scan of the neck. Now, CT scan is often less often used compared to an ultrasound scan as far as thyroid is concerned. So, the main use of doing a CT scan of the neck is when the surgeon wants to plan a surgery. So, he wants to know if it's a big thyroid gland, if there are larger nodules. He wants to know the relation of these gland and the nodules to the major blood vessels in the neck, so that it helps him to plan the surgery better. So in such cases, we inject a drug known as IV contrast. A medicine is injected into the vein to do the CT scan. So it is a contrast enhanced CT scan that is most often done when an extensive surgical planning is required. Still, beyond a very small subset of patients may require an MRI scan to further understand the relation of the thyroid gland, of a large gland, with the surrounding structures. Now, there is a last scan known as nuclear scan or 99 technetium thyroid scan, which finds use in a small subset of patients, which Dr. Alpesh has just touched upon. So, if a patient has got a nodule in the thyroid gland, if there is a swelling, if there is a nodule, at the same time, his blood also shows that the gland is functioning more. In a hyper-functioning thyroid with nodule, a technetium thyroid scan is done. This is to understand if that nodule is producing more of hormones, or if one or more of the nodules is producing hormones. It also helps us to plan treatment of such nodules. So again, to summarize,
as far as imaging in thyroid cancer, thyroid nodules are concerned, in most of the cases we rely on an ultrasound scan. Ultrasound scan, अगर मतलब हिंदी में समराइज करें तो अल्ट्रासाउंड स्कैन एक सिंपल सा स्कैन है, एक प्रोब गले में ऐसे लगा के पूरा थायराइड के बारे में हमें ज्ञान मिलता है, अगर नोड्यूल है कि नहीं है, तो साइज कितना है, शेप कैसा है, वो थायराइड कैंसर होने की कोई चांस है कि नहीं, ये पूरा इंफॉर्मेशन हमें एक सिंपल अल्ट्रासाउंड स्कैन से मिलता है. अल्ट्रासाउंड स्कैन के बियॉन्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन हम एक सीटी स्कैन कर सकते हैं. मोस्टली वो सर्जन जब सर्जिकल प्लानिंग करते हैं तो गले की जो ब्लड वेसल्स होता है उसके थायराइड के साथ क्या रिलेशन होता है, ये सब समझने के लिए सीटी स्कैन नेक की लेते हैं. और फिर एक एमआरआई स्कैन है, बहुत छोटे सबसेट ऑफ पेशेंट्स में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने के लिए हम करते हैं. और न्यूक्लियर स्कैन जो थायराइड नोड्यूल वाले पेशेंट है, अगर उसका थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करता है, हाइपर थायराइड स्टेट में होता है, तो उसके बारे में ध्यान मिलने के लिए न्यूक्लियर स्कैन या टेक्नीशियन थायराइड स्कैन हम करते हैं. Thank you, sir, for giving overview on different imaging tools. So ultrasound neck is our go-to imaging tool for the evaluation of the nodule. It helps in identifying the nodule which requires further evaluation, whereas thyroid scintigraphy will be helpful only when nodule is functional. So Dr. Chitresh, how are thyroid nodules are formed in the neck, and do we regularly screen family members in case a relative had a thyroid cancer? Good evening, everyone. So this is the most common question asked by the patient that डॉक्टर साहब ये थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल मुझे क्यों हो गया और ये क्या कैंसरस है या नहीं होगा. So it looks very simple, but rather it's very difficult to explain the patients how the thyroid nodules are formed. So I'll try to explain to everybody. So we know that iodine is a very essential part for the thyroid hormone genesis. Iodine हम सबके भोजन में होता है, नमक में होता है, और उसकी डेफिशिएंसी जब होती है तो हमारी थायराइड ग्लैंड यूजुअली ज्यादा काम करती है, हाइपरप्लेजिया होता है, ओवर फंक्शनिंग होती है. कंपनसेट करने के लिए हमारी जो नीड है बॉडी में, स्पेशली जब हम यंग एज में होते हैं, ग्रोइंग एज में होते हैं, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, और समटाइम्स जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और लैक्टेशन होता है, तो ये फिजियोलॉजिकल रीजंस हैं, तब हमारी ग्लैंड ओवर फंक्शनिंग होती है, थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करती है. और थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं बहुत सारे, जिसका भी हम सबने जिक्र सुना. तो फॉलिकल्स के अंदर थायराइड हार्मोन जेनेसिस होती है. इट्स लाइक अ बलून जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे स्मॉल बलून्स हैं. वो जो अंदर वाले बलून्स हैं उनमें थायराइड हार्मोन जेनेसिस होती है, मतलब थायराइड हार्मोन बनता है. तो जब आयोडीन डेफिशिएंसी है या हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो हमारी थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाती है. तो ये छोटे छोटे नोड्यूल्स जो स्मॉल बलून्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, और कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें फील होने लगते हैं. ये एक भी हो सकते हैं, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर ये एक है तो हम बोलते हैं इसको सॉलिटरी नोड्यूल, अगर एक से ज्यादा है तो बोलते हैं मल्टी नोडुलर गोइटर. एक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. समटाइम्स इट मे कन्वर्ट इनटू कैंसर आल्सो, नॉट एवरी टाइम. मोस्ट कॉमन नोड्यूल्स आर बेनाइन एज टोल्ड बाय डॉक्टर अल्पेश. तो एक तो ये कारण है. दूसरा कारण है कभी कभी ऑटोइम्यून डिजीजेस. हमने बहुत बार सुना होगा हमको थायराइडाइटिस है, किसी को और कोई ऑटोइम्यून डिजीज है. ऑटोइम्यून डिजीज में भी थायराइड नोड्यूल्स बन सकते हैं. एंड तीसरा कारण है जिस पर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, कैंसर. तो जेनेटिक डिजीज, कभी कभी फैमिली में एक म्यूटेशन हुआ, तो फैमिली में भी जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से ये नोड्यूल्स बनते हैं. और ये नोड्यूल्स बेनाइन भी हो सकते हैं, मतलब नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, और ये नोड्यूल कैंसरस भी होते हैं. तो अब हमने ये समझ लिया कि ये फैमिली में भी रन कर सकते हैं, और ये सिंपल भी हो सकते हैं जो फैमिली में रन नहीं करते. ये कैंसरस भी हो सकते हैं, ये नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकते हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं. तो इसी के अनुसार इनकी जेनेसिस थी. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि हम फैमिली मेंबर्स को स्क्रीन करें कि ना करें. स्क्रीन का मतलब होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम कोई टेस्ट करके देखने चाह रहे हैं कि उनको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है. जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी फैमिली में मेरे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इसको हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव बोलते हैं, अगर इनमें से किसी को कोई थायराइड कैंसर हो गया, तो मैं ये पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब मुझे कितना रिस्क है. तो उस रिस्क को जानने के लिए कि कितना है, हम स्क्रीन करें कि ना करें. तो थायराइड कैंसर
एक तरह का नहीं होता। यूजुअली पेपिलरी, मेडुलरी, फॉलिकुलर, एनाप्लास्टिक, ये 4 तरह के थायराइड कैंसर्स होते हैं। आपने बस इतना याद रखना है कि कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो फैमिली में रन करते हैं क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जिसको हम रेट म्यूटेशन बोलते हैं। तो अगर आपके डॉक्टर, फिजिशियन या सर्जन ने आपको बताया है कि आपको जो ये थायराइड कैंसर है ये फैमिली में रन कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको कम से कम साल में एक बार थायराइड अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए और खुद भी अपनी नेक को एग्जामिन, पैल्पेट करते रहना चाहिए कि कोई नोड्यूल तो नहीं बना है। इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। तो मिनिमम एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो साल में एक बार होनी चाहिए। और जैसे कि अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन नहीं होता है, और अगर आप हाई रिस्क पेशेंट हैं, आपके फिजिशियन या सर्जन सजेस्ट करते हैं, तो आप 6 महीने में भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और नेक पैल्पेट कर सकते हैं। इसको सेल्फ नेक इवेल्युएशन या एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 6 से 1 साल, सभी केस में नहीं, कैंसरस में भी जो फैमिली में रन करते हैं, जिनमें हमें म्यूटेशन पता चलता है, उनमें कराना है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ये जो एक्सरसाइज है हमारे लिए हेक्टिक है, हम भूल जाएंगे, हम बार बार नहीं कराना चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से म्यूटेशन एनालिसिस भी करा सकते हैं। अगर आप म्यूटेशन एनालिसिस कराते हैं मेडुलरी थायराइड कैंसर में और आप रेट म्यूटेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो अगर नेगेटिव है, तो फिर आपका रिस्क एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह है, बराबर है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसके बराबर है। फिर आपको रेगुलरली थायराइड स्क्रीन करने की, अल्ट्रासाउंड कराने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर आप नहीं करा पाते हैं किसी कारणवश, तो आपको जरूर 6 महीने से 1 साल में एक बार थायराइड अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। बस इतना ही डॉक्टर Thank you, sir. तेजस्वी, आपकी क्वेश्चन। जी जी। Thank you, sir, for explaining in detail how thyroid nodules are formed. Sir also highlighted importance of screening of family members, especially if the cancer turns out to be a medullary thyroid cancer. Dr. Alpesh, sir, when to consult endocrinology for thyroid nodules? And do all thyroid nodules require fine needle aspiration, that is sui ka janch? And do they all eventually lead to thyroid cancer? Sir, you are not audible, sir. Ah, so first question is, what is the role of endocrinologist in general evaluation of thyroid nodules? So endocrinologists have two important roles. One is a patient can come to an endocrinologist for a basic evaluation of thyroid nodule, saying कि डॉक्टर साहब गले में गांठ है, स्वेलिंग है, हम इसका जानना चाहते हैं कि इसका क्या खतरा है कैंसर का, या क्या हमें करना चाहिए। तो एक एक तो हो गया बेसिक एवेल्युएशन। So उसमें we do a history, we do a physical examination, we look at certain pointers which point towards increased risk for malignancy. For example, as a general rule, we believe कि thyroid cancers are more common if nodule occurs at extremes of ages, if there is a history of head and neck radiation, गले में सिकाई की कोई हिस्ट्री है, या बहुत छोटी उम्र में या बहुत बड़ी उम्र में नोड्यूल्स आ रहे हैं, या जैसे मैंने पहले बात की कि कोई कंप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि विंड पाइप या फूड पाइप पे कंप्रेशन या नर्व पे कंप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये जनरली इंडिकेट करते हैं कि नोड्यूल कैंसरस हो सकते हैं, और उसमें हमारा इवेल्युएशन हम बहुत क्विकली एंड रैपिडली करना चाहते हैं। एक तो ये इवेल्युएशन हो गया। दूसरा इवेल्युएशन एज अ जनरल रूटीन अगर हमें लगता है तो वी विल आस्क फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ नेक, जो कि एक तरीके से हमारा वर्क होर्स है फॉर थायराइड इवेल्युएशन, थायराइड नोड्यूल इवेल्युएशन, और जिसके बारे में डिटेल्स डॉक्टर अरुण ने आपको बताई। तो एक ये इवेल्युएशन हो गया। दूसरा फंक्शनल एस्पेक्ट का इवेल्युएशन एज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ थायराइड फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करने, जो कि आजकल रूटीनली बहुत कॉमनली आजकल हमारे ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स पे बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन करना किस तरीके से कि कोई हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म तो नहीं है। स्पेशली अगर हाइपर थायरॉयडिज्म है तो आगे हमें टॉक्सिक नोड्यूल्स यानी फंक्शनिंग नोड्यूल्स रूल आउट करना, जो कि हम एक न्यूक्लियर स्कैन की मदद से करते हैं। तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। The second question was that do all thyroid nodules require fine needle aspiration, और जो कि हम common language में बोलते हैं सुई की जांच। So no, the answer is no. All thyroid nodules do not need a fine needle aspiration. So what we do, as Dr. Arun told, we do an ultrasonography of neck, and based on that ultrasonography of neck, we look at certain characteristics of the nodule. So it is and for standardization, there are different systems which have been made. For example, there is an American College of Radiology system which makes it clear for the sonologist to grade the thyroid nodule under
so many headings. For example, there are 5 headings under which sonologist should grade the nodule, and based on this grading, a score is derived, and based on this score, we see whether this nodule requires evaluation or not. सो एक बेसिक एग्जांपल मैं दे करके समझाता हूँ कि हम नॉड्यूल में हम देखते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसका साइज, शेप कैसा है, उसके उसके अंदर के कोई कैल्सिफिकेशन तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम देखते हैं और फिर हम एक नॉड्यूल का स्कोर बनाते हैं। और जो मैंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की, उसमें डॉक्टर अरुण ने भी बात की थी कि हम TR1, TR2, TR3, TR4, TR5 इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। और जनरली माना जाता है कि जो नॉड्यूल्स का स्कोर लोअर साइड पे होता है, स्पेशली जैसे TR1 और TR2 नॉड्यूल्स, उनको बिल्कुल FNAC की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं। साथ में जैसे TR3 नॉड्यूल्स हो गए तो 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर के नॉड्यूल को हम सुई की जांच एडवाइस करेंगे। TR4 नॉड्यूल हो गया तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हाई रिस्क होते जा रहे हैं तो हम कम साइज पे FNAC एडवाइस करना शुरू कर देंगे, 1.5 सेंटीमीटर पे। TR5 में हम 1 सेंटीमीटर पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि एक अल्ट्रासोनोग्राफी नेक बहुत अच्छे से परफॉर्म करना और स्टैंडर्डाइज तरीके से परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन लेते हैं कि वेदर पेशेंट रिक्वायर्स FNAC और नॉट। Now, the next question is whether all nodules are cancerous. Yes, sir. Is that, Do they yeah? all eventually lead to thyroid cancer? So this is a myth that all nodules lead to cancer. In fact, it is the reverse. More than 90% of all thyroid nodules are benign. They are not cancerous. And so this is reassuring news that most thyroid nodules are benign. And in fact, जैसे मैंने कहा कि अभी incidental detection बढ़ रहा है, तो लोग जैसे सोनोग्राफी हुआ, किसी और कारण से हमें नोड्यूल दिखता है, तो लोग बड़े पैनिकी हो जाते हैं कि ये नोड्यूल आ गया है। लेकिन आप समझने की बात ये है कि 9 में से 10 नोड्यूल्स जो हैं वो कैंसरस नहीं होते हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आप एक ट्रेन्ड क्लिनिशियन के पास जाएंगे तो वो आप रूटीन जो एवेल्यूएशन है वो इसका बता सकते हैं। Thank you, sir. Sir highlighted the size and iris features of nodules on ultrasound, like microcalcification and its infiltrative margins will decide whether FNA of the nodule is required or not. And FNA is a simple procedure. It's a daycare procedure, can be done on people who are on blood thinners without stopping the medication. FNA will further contribute in assessment of the thyroid cancer risk as we analyze the cells directly. Sir, my next question is to Arun, sir. So, what is radioiodine therapy and can it be done for any thyroid nodule? Yes. So, radioiodine treatment is a type of treatment that is done in basically in nuclear medicine. So, there are two types of radioiodine treatment. Before we answer the question of whether radioiodine treatment is useful for treatment of nodules, there are two types of radioiodine treatment. One is known as a low dose radioiodine treatment. The other is a high dose radioiodine treatment. So, high dose radioiodine treatment is basically used in the treatment of thyroid cancer. So, what do we call as high dose? Like we measure distance in centimeter or meter. We measure the amount of radioactivity, the medicine that we give in terms of millicurie. So, anything that is more than 30 is high dose radioiodine treatment that requires admission. It is not a daycare procedure that is used in the treatment of thyroid cancer. So, we leave that apart. Low dose radioiodine treatment is basically the treatment that is used for treatment of nodules. Now, can we treat all nodules with radioiodine? Unfortunately, we cannot. We treat only those nodules which are hyperfunctioning also. So, those nodules which produce more amount of hormones, they can be treated with radioiodine. So, how do we administer radioiodine treatment? It's a very simple treatment. The drug is given either in the form of a capsule or as a liquid. The patient is asked to swallow the drug. Now, after that, the drug gets absorbed from the stomach, then it goes to the nodule which is functioning more. It stays there, it starts emitting radiation, small quantity of radiation is emitted, and eventually the functioning of the nodule is destroyed. So basically, whichever nodules are hyperfunctioning can be very easily treated with radioiodine. It's a very cost-effective treatment also. It's a one-time treatment. You give the drug, then you wait for 1.5 to 3 months. Then you check the blood levels. So previously, if it was functioning more, after treatment, you expect it to come below the normal levels. And then you start the patient on thyroid medications if required. So low-dose radioiodine therapy, again to summarize, low-dose radioiodine therapy
जो नोड्यूल ज्यादा काम करते हैं, हाइपर फंक्शनिंग होता है, उसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है। बेसिकली वो दवा ओरली दी जाते हैं और वो स्टमक से अब्जॉर्ब होके नोडुल में जाके चिपक जाता है। वहाँ से स्मॉल डोजेस में रेडिएशन आके उसकी फंक्शनिंग कम होते जाते हैं। वो सिंपल सा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बस एक ही बार ट्रीटमेंट देना होता है और बीमारी ठीक हो जाता है। Now, one more thing I want to highlight in radioiodine therapy is most of the time patient asks whether the size of the nodule will come down. So, as a matter of fact, around 40 to 50% of the cases, you can see that the size of the nodule also reduces with radioiodine therapy, although that is not our primary aim. Definitely, in almost 85 to 90% of the cases, in a single setting, the functioning of the nodule gets corrected. So, that is all regarding radioiodine therapy and treatment of nodules. Thank you, sir. Sir highlighted that they use a radioactive form of iodine called iodine 131 that will especially act on thyroid tissue, and it is usually indicated in toxic nodule and toxic multinodular goiter. So, Chitresh, sir, what are the surgical options to treat thyroid nodules, sir? Yes. So regarding the surgical options, first I would like to tell what are the extent for the surgery. So every patient, every individual, every human being is afraid of surgery. So कोई नहीं चाहता कि हमारा ऑपरेशन हो कोई। तो इसमें हम अगर बीमारी सिर्फ आधा ग्लैंड में है और कैंसरस नहीं है, तो हम आधा ग्लैंड निकालते हैं, तो उसको हेमीथायरॉयडेक्टमी बोलते हैं। जिसके बाद हमारा आधा ग्लैंड जो बचा है वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर सकता है और हमें फिर थायराइड हार्मोन लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती। दूसरा स्टेज होता है, यूजुअली हम पूरा ग्लैंड निकालते हैं, दोनों तरफ के हाफ निकालते हैं, राइट एंड लेफ्ट, उसको हम टोटल थायराइडेक्टमी बोलते हैं। उसके बाद हमको थायराइड हार्मोन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड पूरी बॉडी से निकल गई तो अब थायराइड डिफिशियंसी हो जाएगी। थायराइड हार्मोन इज ए वेरी वेरी इसेंशियल हार्मोन फॉर आवर बॉडी, तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, वो हमें लेना पड़ेगा। और अगर ये कैंसरस था, थायराइड कैंसर था, एंड इट हैज बीन स्प्रेड टू द लेटरल नेक नोड्स ऑल्सो, हमारे गर्दन में जो नोड्स होते हैं उनमें अगर ये चला गया था, तो फिर हमें सर्जरी के दौरान वो नोड्स भी निकालने पड़ते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द डिजीज की वो क्या था। नाउ द सेकंड थिंग इज कि हम सर्जरी करते कैसे हैं और हम क्यों करते हैं। तो जैसे डॉक्टर अल्पेश ने बताया था अभी हमें, डॉक्टर अरुण ने उस बात का समर्थन किया कि बहुत सारे जो थायराइड नोड्यूल्स होते हैं वो कैंसरस नहीं होते, ऑलमोस्ट मोर देन 90% आर नॉट नॉन कैंसरस। तो इनमें सर्जरी करने की जो इंडिकेशंस हैं या जरूरत है बहुत कम होती है, और जो कैंसरस होते हैं उनमें सर्जरी बहुत बार करनी पड़ती है। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो 90% जो कैंसरस नहीं है उनमें सर्जरी नहीं करनी, और जो कैंसरस हैं तो उनमें 90% सर्जरी करनी है। तो अगर कैंसरस नहीं है, जो नॉन कैंसर थायराइड नोड्यूल्स हैं, उनमें हम सर्जरी क्यों करना चाहते हैं या कब करना चाहते हैं। पहला रीजन ये है, जो हमने सिम्टम्स में डॉक्टर अल्पेश ने बोला था कि ये फूड पाइप या विंड पाइप पे प्रेशर डाल रहा है, या जो हमारी आवाज निकालने के लिए जो नर्व होती है जिसको हम लेरिंजियल नर्व बोलते हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और हमारी आवाज में परिवर्तन आ रहा है, आवाज भारी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खाना निकलने में दिक्कत हो रही है। तो अगर ये थायराइड नोड्यूल कैंसरस नहीं भी है तो भी हम सर्जरी कराते हैं। और इनमें से कोई सिम्टम नहीं भी है और 2 सेंटीमीटर का एक थायराइड नोड्यूल है, जिसमें अल्ट्रासाउंड ने बोला कि हाई रिस्क है, एफएनएसी करने के बाद ये प्रूव हुआ सुई की जांच के बाद ये कैंसरस है, तो हम 2 सेंटीमीटर के थायराइड नोड्यूल में भी सर्जरी करेंगे। तो ये दोनों तरफ हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि रिस्क और बेनिफिट क्या है। अब आते हैं कि सर्जरी हम करते कैसे हैं। तो ट्रेडिशनली हम सब ने देखा है कि हम सर्जरी हमेशा करते हैं, एक चीरा लगाते हैं, उसके बाद जो टारगेट ऑर्गन होता है, जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी है तो आपके पेट में राइट साइड ऊपर की तरफ चीरा लगा होगा, अगर आपकी किडनी की सर्जरी है तो बैक में पीछे चीरा लगा होगा, अगर थायराइड की सर्जरी है तो बहुत स्वाभाविक है कि आपकी गर्दन में सामने की तरफ एक चीरा लगा होगा जो 6 से 8 सेंटीमीटर, साइज कितना था उसके हिसाब से होता है। बट आजकल हम बहुत सुनते हैं कि भाई एंडोस्कोपिक सर्जरी हो गई, लेजर सर्जरी हो गई, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई, रोबोटिक सर्जरी हो गई, इतना सारा डेवलपमेंट हो गया सर्जरी के फील्ड में। तो पहले की तरह नहीं रहा कि अब हम स्टिच गिनते हैं कितने टाके आए तो बड़ी सर्जरी है, ऐसा नहीं है। अब हम एक मिनिमली इंसिजन से, यानी कि एक छोटे से इंसिजन से, की होल के बराबर होल से भी बड़ी बड़ी सर्जरी कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक थायराइड सर्जरी, की होल थायराइड सर्जरी या रिमोट एक्सेस थायराइड सर्जरी। इसमें हम क्या करते हैं, या तो चेस्ट वॉल या फीमेल्स में ब्रेस्ट के ऊपर छोटे छोटे 2-3 इंसिजन बनाते हैं, चीरा लगाते हैं और वहां से एंडोस्कोप अंदर डालते हैं, गर्दन के सामने आते हैं,
स्किन को लिफ्ट करते हैं, और थायराइड सर्जरी जो ओपन तरीके से करते थे उतनी ही मेटिकुलस सर्जरी, उतना ही प्रिसीजन के साथ, उतनी ही सेफ सर्जरी कर सकते हैं। या दूसरी अप्रोच होती है, आप आजकल मुंह से भी सर्जरी करते हैं। मुंह से मतलब आपके दांत और होठों के आगे एक स्पेस बनाते हैं और ऊपर से सर्जरी करते हैं, इसको ट्रांसओरल सर्जरी कहते हैं। ये लेटेस्ट टेक्निक है। इसमें भी आपके शरीर पे कहीं निशान नहीं आता। तो अगर थायराइड नोड्यूल छोटा है, 3 से 4 सेंटीमीटर है, यूजुअली कैंसरस नहीं है, पेशेंट यंग फीमेल है या मेल है जो अपनी बॉडी फिजिक को लेके अप्रिहेंसिव हैं, कॉस्मेसिस को ज्यादा ध्यान रखते हैं, गर्दन में निशान नहीं चाहते हैं, तो हम रिमोट एक्सेस सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी करते हैं जिससे निशान ना आए। और अगर कैंसर है, बहुत बड़ा नोड्यूल है जो हम कर नहीं सकते, तो हम पेशेंट के चाहने के बावजूद भी हमें चीरा लगा के सर्जरी करनी पड़ती है। एक और आजकल हम बहुत सुनते होंगे, रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी। तो जो रोबोटिक सर्जरी है उसका तात्पर्य ये है, उसका मतलब ये है कि सर्जरी तो सर्जन ही करता है। सर्जन दूर से बैठा है, उसके हाथ में कंसोल है, वीडियो गेम की तरह एक ऑपरेटिव डिवाइस है, और जो मैंने आपको बताया ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये पेशेंट की बॉडी पे हैं, और वो 2-3 मीटर की दूरी पे बैठ के रोबोट से सर्जरी कर रहा है। तो रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि सर्जन सर्जरी नहीं कर रहा, सर्जन ही सर्जरी कर रहा है, बट उसको हेल्प करने के लिए रोबोट है बीच में। तो इसका फायदा क्या है, हम क्यों कराएं रोबोटिक सर्जरी? तो फायदा जानने से पहले इसका एक नुकसान है, वो हम बात करते हैं। तो ये सर्जरी बहुत कॉस्टली है। अभी हमने इंडिया में अब नए रोबोट आ रहे हैं जो सस्ते हैं, अदरवाइज ये सर्जरी में रोबोट की ही कीमत 2 से 3 लाख रुपए होती। तो अगर हम सर्जरी में इसकी कीमत को हटा दें, तो रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि जब हम सर्जरी करते हैं तो हम इसमें जो विजन होता है, जो क्लैरिटी होती है, जो हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे मैंने अभी बात की फूड पाइप की, बात की विंड पाइप की, बात की लेरिंजियल नर्व की, तो ये सब स्ट्रक्चर्स हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि जो विजन होता है वो मैग्नीफाइड होता है। हम इसमें 3 से 10 गुना मैग्नीफाइड विजन देखते हैं। तो जितना मैग्नीफाइड विजन देखेंगे उतनी फाइन सर्जरी कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे नेचुरल टेंडेंसी होती है, हमारे हाथों में ट्रेमर होता है, हाथ हिल जाते हैं, तो ये रोबोटिक सर्जरी में ये ट्रेमर्स नहीं होते, इनको ये अवॉइड करती है सर्जरी, इनको कंपनसेट करती है, आपको जर्की मूवमेंट्स नहीं होते। तो ये सेफ सर्जरी है। बट जैसे कि मैंने कहा, कॉस्टली सर्जरी है। तो रोबोट की सहायता से आप ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं और मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी भी कर सकते हैं, मतलब की होल सर्जरी भी कर सकते हैं। बट रोबोट का एक फायदा और होता है, जैसे जब हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं एंडोस्कोपिक, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसकी वर्किंग जो होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है, 180 डिग्री। जैसे कि आप मेरे हाथ को देखेंगे ऐसे मूव कर सकते हैं, बट रोबोट की जो आर्म होती है वो उसको ऐसे 360 ऐसे घुमा सकता है। तो डिफिकल्ट एरिया में सर्जरी करनी है, थायराइड के पीछे की तरफ जाना है, कोई डिफिकल्ट नोड निकालना है, नर्व को बचाना है, तो रोबोटिक सर्जरी बहुत ही हेल्पफुल है। बट जैसा कि मैंने कहा, कॉस्टली है, कम सेंटर्स पे होती है, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल। तो हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी एंडोस्कोप से, ओपन सर्जरी चीरा लगा के, और रोबोटिक सर्जरी, तीनों ही तरीके से सर्जरी कर सकते हैं। इफेक्ट तीनों का सेम है, आउटकम कॉस्मेटिक कॉस्मेसिस के हिसाब से तीनों का डिफरेंट, और सेफ्टी के हिसाब से तीनों का डिफरेंट। Thank ओवर you, टू यू sir. डॉक्टर दीपेश। Thank you, sir. Sir mainly spoke about two types of thyroid surgery, that is hemithyroidectomy or lobectomy, or the near total thyroidectomy. Sir also highlighted the different newer approaches of the thyroid surgery, that is endoscopic, transoral, and also spoke well about the merits and the demerits of the robotic surgery. Uh, Sir, Alpesh sir, so what are the common scenarios? Would you advise non-surgical options? Any role of diet in prevention of the nodule progression? So, uh, non-surgical options. If we discuss non-surgical options, there are various scenarios where we go for non-surgical options, and one of the most important non-surgical option is close observation, यानी wait and watch policy. So अगर हम if we have evaluated the thyroid nodule and we find that there are no high risk features on ultrasonography, or there is FNAC has been done, as needle test has been done, and it shows that the nodule is benign, then we don't go for any surgical option, and we can safely observe the nodule with serial sonography monitoring over a period of 6 to 24 months. So the follow up period will vary according to the risk characteristic of the nodule, and that is decided by the clinician. So first and most important non-surgical option would be a wait and watch policy or close observation. And if on serial observation you see that the nodule is increasing in size, or there are appearance of new onset high risk characteristics, then you can subject the nodule again to a repeat needle test and decide if whether
you want to go through the surgical route or you want to keep the patient under close observation. So that is first scenario. Other scenarios where non-surgical option is done, as told by Dr. Arun, radioiodine therapy is used for hyperfunctioning nodules. So that is also a non-surgical option. Other non-surgical options could be for cystic nodules. Generally, cystic nodules are believed to be benign, so they don't carry malignancy risk, but at times they can cause symptoms. And for symptomatic cystic nodules, you can do a single time aspiration, or rarely people do percutaneous ethanol ablation for recurrent cystic nodules. Other forms of therapy that are also described for benign thyroid nodules are uh, microwave ablation, radio frequency ablation, which are done by interventional radiologists. सो अगर मैं समराइज करूं हिंदी में, तो हम नॉन सर्जिकल ऑप्शन जो थायराइड नोड्यूल में देख रहे हैं वो एक है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी, क्लोज ऑब्जर्वेशन, सीरियली अल्ट्रासाउंड करना, जिसका कि इंटरवल 6 से 24 महीने के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द क्लिनिकल सिनेरियो। रेडियो आयोडीन थेरेपी जो कि हाइपर फंक्शनिंग नोड्यूल्स के लिए की जा सकती है। फिर हमारे पास जो सिस्टिक नोड्यूल यानी जो पानी से भरे नोड्यूल्स हैं, जो कि वैसे कैंसरस नहीं होते हैं लेकिन कोई सिम्टम्स कर रहे हैं, उनके लिए सिंगल एक बार में सारा नोड्यूल्स एस्पिरेट करना या फिर इथेनॉल से उसको अब्लेट करना, जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं बड़े सेंटर्स पे। और रेयरली बिनाइन नोड्यूल्स के लिए कुछ सेंटर्स पे अल्ट्रा माइक्रोवेव अब्लेशन जो कि हीट अब्लेशन है, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन भी प्रैक्टिस किया जाता है। तो ये सारे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं, एंड बहुत सारे थायराइड नोड्यूल्स मैं कहूँगा कि नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, स्पेशली वेट एंड वॉच पॉलिसी में हम बहुत सारे नोड्यूल्स को रखते हैं। About your second question, which was about the role of diet in thyroid nodules, I think this question becomes less important today, and this is to testimony to the fact that we have a very well established national iodine deficiency disorder control program, which has been tremendously successful through the route of iodine fortification of edible salt. So as it was discussed by Dr. Chitresh, iodine is an important micronutrient which is important for formation of thyroid hormones. And if there is iodine deficiency, then the thyroid follicular cells, they tend to proliferate, and there is production of goiter or nodular goiter. So iodine deficiency was earlier an important cause of thyroid nodules. And if we talk about diet in thyroid nodules, so iodine is one important aspect which needs to be considered. Now, if we see, the government of India launched National Goiter Control Program, and then it was changed to National Iodine Deficiency Disorder Control Program, and it made it mandatory for the edible salt to be fortified with iodine. And this program has led to a decrease in the rate of decrease or almost decrease in the rates of iodine deficiency induced disorders such as hypothyroidism, thyroid nodules, endemic goiters, which were very prevalent, especially in the sub-Himalayan belt. Now, if we see the success of this program, there are routine surveys which are conducted, and a 2018-19 India Iodine survey that indicated that around 3/4 of our households are consuming adequately iodized salt. So that is a good achievement. And 90% of households are consuming some degree of iodized salt. And the program is now moving into its next phase, which is universal salt iodization. And the target is that more than 90% of households should be consuming adequately iodized salt, which is a concentration of more than 15 ppm. So if I summarize, basically आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि थायराइड नोड्यूल्स बनने में कारगर हो सकता है, स्पेशली अगर उसकी डेफिशिएंसी हो। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया है आयोडीन डेफिशिएंसी को, और आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के थ्रू सॉल्ट फोर्टिफिकेशन विद आयोडीन है चलता है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है जो कि हर स्ट्रेटा का पर्सन कंज्यूम करता है, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी को हम बहुत हद तक कंट्रोल कर पा रहे हैं। और इसका जो एक कारक है वो इंडिया आयोडीन सर्वे है, जो कि हमें बताता है कि हर 4 में से 3 घरों में आयोडीन की जो मात्रा है नमक में वो एडिक्वेट है, जो कि हम कुछ पैरामीटर से डिफाइन करते हैं। और 90% घरों में कुछ हद तक आयोडीन जा रहा है, और हमारा अगला टारगेट ये है कि 90% से ज़्यादा घरों में, हाउस होल्ड्स में आयोडीन की जो मात्रा है वो
पूरी हो, एडिक्वेट हो, तो ये हम नेक्स्ट फेज में हम मोस्टली हम अचीव करने की हमारी टारगेट है। तो आयोडीन डेफिशिएंसी एक इम्पॉर्टेंट एज अ गाइट्रोजन आता है अगर हम थायराइड नोड्यूल की बात करते हैं, बट इन करंट डे एंड एरा दिस हैज़ बीन वेरी वेल टेकन केयर ऑफ थ्रू द रूट ऑफ salt fortification, and that's all. Thank you, sir. Thank you for elaborating other surgical options that is available. Like observation is the one of the thing, and needle aspiration, ethanol therapy, and radio frequency ablation. And these you also highlighted that usually is done for the benign nodules and well suited for the cystic nodules. That is ethanol therapy and needle aspiration. And also highlighted the importance of iodine as a goitrogen, and also told various national programs, and because of the fortification of iodine is not a current issue. So diet doesn't play that important role in prevention of the nodule progression. So, Dr. Arun, please explain briefly the importance of the nuclear medicine, that is radioiodine scan, in follow-up of the thyroid cancer. Yeah. So before answering that question, I'd again like to highlight the fact that what Dr. Chitresh and Dr. Alpesh has already mentioned, that more than 90% of the thyroid nodules are not harboring any cancer. So you need not be worried if you have a thyroid nodule. Now the second good thing is, even if it is a thyroid cancer, even if it is cancer, thyroid cancer is different from other types of cancer, in the sense that 95% of the patients with thyroid cancer, it is completely curable. So it's one of those completely curable cancers. So even if you fall in that unlucky 10% which has got thyroid cancer, there's nothing to be worried about because it is almost completely curable. Now, there are basically two steps in treatment of thyroid cancer. The first and the most important step is a surgery. Now, that is where you remove the thyroid gland. As Dr. Chitresh has already said, if you are suspecting thyroid cancer or it is a proven case of thyroid cancer, you remove the thyroid gland completely. That is known as total thyroidectomy. So the second step in treatment is what we do in nuclear medicine. So in total thyroidectomy, what we do is the entire thyroid gland is removed. Although we say that the gland is completely removed, usually there is some microscopic thyroid remnants, thyroid tissue remnants that is left where the thyroid gland was initially sitting. So we do a scan known as radioactive iodine scan or 131 iodine scan, where you give very small quantity of this radioactive iodine. It is again given orally, and after 2 days you take a scan of the entire body. So in this you get two information. One is whether there is any microscopic residual thyroid tissue present in the thyroid bed, and second is if at all this thyroid cancer which was removed, the thyroid cancer which was present in the gland that is removed, before removal it has spread to any other part of the body. Mostly it spreads to the neck in very small percentage of cases, and in a still smaller percentage of cases it can spread to other parts of the body. So from an iodine scan, you can understand two things: whether there is any residual, normal, minimal microscopic thyroid tissue that is present in the surgical bed. Second is whether it has spread to any other part of the body. So in either of these two are present, if there is residual thyroid tissue or if it has spread to any other part of the body, then you move ahead with radioactive iodine treatment. So this is different from the low dose radioiodine therapy which we mentioned regarding treatment of nodules. This is high dose radioiodine therapy. So high dose radioiodine therapy, the amount of radioactive medicine that you give is say more than 30 millicurie. It can go from 30 up to 200 millicurie. It is again a very simple treatment modality. The medicine is given through the mouth, but in this case you have to admit the patient. You have to admit the patient not because the patient would have any problems from the treatment. This is to prevent other normal people from getting exposed to the amount of radiation. But having said that, it's a very safe, painless, very effective treatment option. So what does this radioiodine do? It goes and it attaches itself to any minimal microscopic residual thyroid tissue that is present, or any thyroid cancer that is spread to any part of the body. So it gets trapped within the cell, it starts emitting radiation and it destroys those cancer cells. So in surgery, you have removed the major part of the gland, or you have removed the gland completely. Whatever microscopic thyroid cancer cells that are present are completely destroyed by the radioiodine treatment. Now, after giving radioiodine therapy, you wait for 6 months.
and 6 months later you take another radioiodine scan. So in that scan you'll be able to find out that all the microscopic residual thyroid tissue has disappeared, and if at all any cells is spread to any other part of the body, that gets destroyed. Now if you happen to find that if at all in a very small percentage of cases, they might require a second sitting of radioiodine. More than 95% of the cases you treat with a single sitting of radioiodine. Very small cases you require a second sitting. If in the first follow-up radioiodine scan you find that nothing is left, normally the scan is coupled with two blood tests known as thyroglobulin and antithyroglobulin antibody. So with these blood tests and scan put together, you can see that the thyroid cancer is completely cleared. If it is completely cleared, you put the patient on an annual follow-up where you just do an ultrasound and these blood tests just to make sure that the disease is not coming back. So again to summarize, जो हाई डोज रेडियोआयोडीन थेरेपी होता है वो थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है. नॉर्मली थायराइड कैंसर की ट्रीटमेंट 2 स्टेप में होता है. पहले सर्जरी होता है टोटल थायराइडेक्टमी जहाँ पे थायराइड ग्लैंड पूरी निकाली जाते हैं. उसके बाद अगर थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक जो आंख से सर्जन को आंख से दिखे नहीं जाते हैं, अगर माइक्रोस्कोपिक रेसिडुअल थायराइड टिश्यू बचा होता है या फिर थायराइड कैंसर सेल्स थायराइड के बाहर कहीं पे अगर गया हुआ है तो वो रेडियोआयोडीन ट्रीटमेंट से हम ठीक कर सकते हैं. तो रेडियोआयोडीन करके दवाई मुंह से दिए जाते हैं और जो थायराइड कैंसर सेल्स बचे होते हैं या थायराइड नॉर्मल टिश्यू होता है वो रेडियोआयोडीन ये ड्रग को ले लेते हैं, वहां पर ट्रैप होके रेडिएशन निकलता है और ये सेल्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो रेडियोआयोडीन सर्जरी और रेडियोआयोडीन ट्रीटमेंट यूज करके थायराइड कैंसर को पूरी मतलब लगभग 90-95% पेशेंट्स को हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं. और रेडियोआयोडीन स्कैन एक चीज होता है कि जो हम स्कैन करके पता कर सकते हैं कि वो बीमारी पूरा ट्रीट हो चुके हैं या फिर एक और डोज की रेडियोआयोडीन की जरूरत है कि. तो एक चीज ध्यान रखना है कि वो 90% की रूल जो होता है 90% थायराइड नोड्यूल्स कैंसर होते नहीं है. वो जो नोड्यूल्स अगर थायराइड कैंसर है तो 90% केसेस में सर्जरी होना चाहिए. तो अगर जो थायराइड कैंसर है 90-95% ऑफ थायराइड कैंसर कंप्लीटली क्योर भी कर सकते हैं. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. Thank you, sir, for your detailed explanation on radioiodine scan and the high-dose radioiodine therapy to prevent the recurrence of the cancer, sir. So, my last question to Dr. Chitresh. So, what are the common complications associated with surgery? Can be prevented or recognized early? How can high-risk individuals to be followed post-surgery? Yes. So every surgery has an inherent or innate risk because it's a challenging thing. So we must appreciate or we must understand that sometimes there are unforeseen events that can happen during the surgery, and it always the complications are explained to every patient beforehand. This may happen, but the chances are very less. So every surgeon has a fixed target or goal. The goal is 0% complication and 100% removal of the disease from the body. So if there is some complications, we will try to recognize it early. जैसे कोई complication है हम चाहेंगे हमें जल्दी से जल्दी पता चले. और सेकंड पार्ट इज हम उसे प्रिवेंट करना चाहेंगे. हम पहले से ये सोचेंगे कि ये हो ना. तो फर्स्ट पार्ट इज प्रिवेंशन. सेकंड पार्ट इज इफ एट ऑल इट इज देयर इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड अर्ली सो दैट इट कैन बी ट्रीटेड टाइमली. तो थायराइड सर्जरी का 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द लो कैल्शियम, जिसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया. कैल्शियम कम हो जाता है बॉडी में और उसका कारण थायराइड नहीं पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं जो एक स्पेशल हार्मोन बनाती हैं पीटीएच, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम को मेंटेन रखता है. तो जब हम थायराइड सर्जरी करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की सप्लाई, ब्लड सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है या वो रिमूव हो जाते हैं इनएडवेंटली या फिर न चाहते हुए, क्योंकि कैंसर है हमें बड़ी सर्जरी करनी है, तो पीटीएच हार्मोन कम हो जाता है और इवेंचुअली कैल्शियम कम होता है और हाइपोकैल्सीमिया होता है. इसके सिम्टम्स होते हैं बॉडी में, हाथों में, उंगलियों में, मुंह के आसपास, होठों पे टिंगलिंग नमनेस जैसी फीलिंग आने लगती है. और अगर ये और कम होता है तो अकड़न हो जाती है. टिटेनस जैसे पहले बीमारी होती है उसको हम टिटेनी बोलते हैं. हाथ पैरों की मसल अकड़ने लगती है. तो हम इसको पहले से कैसे प्रिवेंट करने के लिए, तो बेस्ट थिंग इज कि यू शुड go to a center where the thyroid surgery is regularly being practiced or followed.
क्योंकि जो एक्सपीरियंस सर्जन होते हैं ऑलवेज हम उनको अप्रोच करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। दूसरा ये नेचर ऑफ द डिजीज, अगर कैंसर है बड़ी सर्जरी होगी तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांस ज्यादा है। तीसरा है कि बड़ा गॉइटर है, कभी कभी कैंसर नहीं है बट थायराइड गॉइटर इज सो ह्यूज कि वो 1 kg 2.5 kg, द लार्जेस्ट थायराइड गॉइटर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इंडिया में 7.5 kg, दिस इज द रिकॉर्ड। तो जितना बड़ा थायराइड कैंसर होगा, नॉड्यूल होगा, कॉम्प्लिकेशंस के चांस उतने ज्यादा होंगे, पैराथायराइड इंजरी के चांस उतने ज्यादा होंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब थायराइड नॉड्यूल छोटा है तो टाइमली अपनी कंसल्टेशन लें, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर फिजिशियन या थायराइड सर्जन जो भी आपके आसपास है, आप जाएं फिजिशियन से मिलें और उनकी सलाह पे अमल करें। सेकेंड इज एक्सपीरियंस सेंटर जाएं। थर्ड, अगर हो भी गया है तो आजकल हम पीटीएच सर्जरी करने के बाद पीटीएच हार्मोन का सैंपल लेते हैं और देख लेते हैं लैब में, अगर पीटीएच कम नहीं हुआ है इसका मतलब पैराथायराइड ग्लैंड नॉर्मल है, तो हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा। अगर पीटीएच लेवल कम हो गया है तो हम ये सिम्टम आने से पहले हम पेशेंट्स को कैल्शियम देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है आज पीटीएच कम है तो 48 आवर्स के बाद 24 घंटे के बाद कैल्शियम बॉडी में कम होगा, तो हम उसका वेट नहीं करते, हम पहले से ही कैल्शियम देना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम मुंह से देते हैं, ओरल टैबलेट्स देते हैं। अगर जरूरत पड़ती है और ज्यादा कम होता है तो हम यही कैल्शियम इंजेक्शन नस के थ्रू भी दे सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को, हाइपोकैल्सीमिया को ना होने देने के लिए। एक कॉम्प्लिकेशन हाइपोकैल्सीमिया, दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है वॉइस चेंज। जैसे मैंने डिस्कशन में बताया था कि लैरिंजियल नर्व होती है, जो हम बोल रहे हैं उसको, जो लैरिंग्स साउंड बॉक्स बोलते हैं, उसमें जो मसल्स होती है छोटी छोटी, उनको जो सप्लाई करती है वो नर्व, उसको हम लैरिंजियल नर्व बोलते हैं। तो ये विंड पाइप के बहुत क्लोजली जाती है, थायराइड के साथ क्लोजली जाती है, बहुत फाइन। तो जब हम सर्जरी करते हैं, नॉड्यूल्स बड़े होते हैं तो समटाइम्स स्ट्रेच हो जाती है और इसकी टेम्पररी पैरालिसिस हो जाती है। टेम्पररी मतलब थोड़े दिन के लिए, 6 मंथ में रिकवर हो जाती है। तो अगर ये हम चाहते हैं कि प्रिवेंट हो, तो फिर वही बात है, थायराइड ग्लैंड बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो टाइमली ट्रीटमेंट लेना है। अगर सर्जन अच्छा है तो चांसेस कम है। तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है वॉइस चेंज। तीसरी कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग। थायराइड बहुत ही वेस्कुलर ग्लैंड होती है, बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि वो काम क्या करते हैं। तो लीवर हो गया, थायराइड, पैराथायराइड, इनमें जो ब्लड सप्लाई होती है बहुत ज्यादा होती है। थायराइड में भी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो जब वेस्कुलर, इसको हम बोलते हैं हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स, तो जहाँ थायराइड में ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, जब उस एरिया में हम सर्जरी करते हैं तो ब्लीडिंग के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट ये कॉम्प्लिकेशन हर पेशेंट में नहीं होती हैं। अगर होती भी है तो उनको अर्ली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। आपका जो लास्ट क्वेश्चन था वो था फॉलो अप कैसे करेंगे। तो जैसे अभी अरुण सर ने अभी डिस्कस किया था कि हम स्कैन करते हैं, स्कैन करके देखते हैं कि ये जो डिजीज थी पूरी बॉडी से निकल गई कि नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर सर्जन का टारगेट होता है कि 100% बॉडी से निकालना है, बट समटाइम्स जो ट्यूमर होता है वो ऐसी वाइटल स्ट्रक्चर्स के साथ लगा होता है, जैसे कि आपकी लेरिंजियल नर्व, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। अगर ट्यूमर इस लेरिंजियल नर्व के अंदर, ये नर्व उसके अंदर से जा रही है, तो समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ सेविंग दी वॉइस, हम मरीज की आवाज बचाने के लिए कभी कभी थोड़ा ट्यूमर जान के भी उसके पास छोड़ देते हैं कि आवाज ना डिस्टर्ब हो, और वो जो ट्यूमर थोड़ा छूटा है तो वो रेडियो आयोडीन से उसको ट्रीटमेंट मिल जाए। या कभी कभी आपकी कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी आपकी ब्लड सप्लाई लेके जाती है ब्रेन के लिए। तो अगर हमें पता है कि ट्यूमर कैरोटिड आर्टरी के साथ बहुत सीवियरली अडेड है, चिपका हुआ है, ऐसे हम अलग नहीं कर सकते, तो हम उसे बांध नहीं सकते, उसको इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको इंजर ना करें, हम कभी कभी जान के थोड़ा टिश्यू छोड़ देते हैं कैंसरस, कि फिर वो रेडियोडिन से ट्रीटमेंट। तो कभी कभी हम जान के छोड़ते हैं, कभी हम जो बहुत छोटा था माइक्रोस्कोपिक, जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया, छूट जाता है। और फिर तीसरा बॉडी के बाहर है, तो इन केसेस को हम अक्सर बोलते हैं हाई रिस्क केसेस। तो लो रिस्क तो वो हुए जिसमें 100% कैंसर निकल गया, न्यूक्लियर मेडिसिन में गया, पेशेंट स्कैन कराया, स्कैन इज परफेक्टली ओके, कोई स्पॉट नहीं दिखा उसमें, तो ये तो लो रिस्क हो गए। दूसरा होता है कि उनको स्कैन में स्पॉट दिखे, मतलब बॉडी में कैंसर है, एक कैंसर नेक में हो सकता है, दूसरा लंग्स में है, बोन्स में है। तो जितना ज्यादा बॉडी में बचा हुआ रेजिडुअल हो उतना ही हाई रिस्क है। तो अब हाई रिस्क, जितना हाई रिस्क है उतने ही उसकी फॉलो अप करने की फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार डॉक्टर के पास जाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यूजुअली जैसे डॉक्टर अरुण ने बताया था कि 6 महीने के बाद स्कैन करते हैं, फिर देखते हैं बॉडी में स्कैन है कि नहीं। तो इनिशियली 2 years हम 6 मंथली फॉलो अप करते हैं। और एक स्कैन के साथ साथ एक और हमने ट्यूमर मार्कर का जिक्र किया था इनिशियल पहले संबोधन में, डॉक्टर अल्पेश ने बताया था, डॉक्टर तेजस्वी ने बोला था, थायरोग्लोबुलिन। तो जो 2 तरह के कैंसर होते हैं, पेपिलरी और फॉलिकुलर, उनमें थायरोग्लोबुलिन भी सीक्रेट होता है। तो हम एक ब्लड टेस्ट भी लेते हैं,
थायरोग्लोबिन, अगर थायरोग्लोबिन नॉर्मल है, बढ़ा हुआ नहीं है, स्कैन नेगेटिव है, तो ये लो रिस्क है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर थायरोग्लोबिन बढ़ता है तो फिर हमने स्कैन करके देखना है कि जैसे ही थायरोग्लोबिन बढ़ा, स्कैन करके देखते हैं बॉडी में वापस तो नहीं आ रहा। तो ये फॉलो करने का तरीका है। तो इनिशियली 6 मंथली और 1 ईयर, आफ्टर 5 years इट कैन बी इंक्रीज टू 1 ईयर टू 2 ईयर। धीरे धीरे जैसे जैसे संभावना आने की कम है, हम फॉलोअप के ड्यूरेशन को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और जैसे डॉक्टर अरुण ने कहा था कि थायराइड कैंसर है, उसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, 20 ईयर सर्वाइवल होता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी कैंसर से इसमें फॉलोअप अच्छे से हो सकता है और ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है, ऐसे क्यूरेबल डिजीज। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you, sir, for explaining in detail the important complications like hypocalcemia, voice change due to the laryngeal nerve palsy, and the hemorrhage. And also, you highlighted the importance of stratifying the patient in the high risk and the low risk post surgery. Also, that will help in following up these patients. Uh, Sir, so we are in the end of this session. So I would like to ask Alpesh sir, any closing comments, sir? Yes, so I think we have discussed the thyroid nodules. The diagnosis is increasing, uh, mainly incidental diagnosis is increasing. So, but most thyroid nodules are benign, and in any instance, if they are cancerous, very good treatment options are available. It is important that you follow up with your clinician, and then accordingly you perform tests and follow advice on a regular basis. So, Arun sir, your final closing Uh, comments. yeah, basically, what I'd like to tell like everyone who's listening to this talk is that once you notice a nodule in the thyroid gland, there is nothing to be worried about. The best thing you can do is you consult a thyroid specialist, get it evaluated. As all of us have said, 90% of the cases it will not be a problematic nodule. So we'll be reassured that nothing is there. If at all something is there, even if it is cancer, it is cancerous, it is completely curable. So thyroid is something that fear is not the answer. You need to consult your doctor, get the right opinion, and there is treatment for everything related to thyroid. That's all. Chitresh sir, your closing comments. Yes. So, as a surgeon, I would like to highlight that you go to the best center, whichever is nearest to you, to minimize the complications. And if you are worried about the scar, so there is scarless options also available in the form of endoscopic thyroid surgery. So you can opt for that. Okay, sir. So, the ultimate goal of this is to identify the malignancy properly in the thyroid nodules and to avoid the over treatment. And low risk nodules can be safely monitored. That was the idea. And I would like to invite Mohan sir to give the closing comment. No, it's not a closing comment. I think I should thank all of you for joining today. So I should thank Dr. Tejasvi for spending time on preparing a good script. I should thank all the panelists, Dr. Alpesh Goyal, Dr. Chitresh, Dr. Arun Shashikumar, my dear friends, who have just contributed to the program. It is not easy to sit through an entire 1 year, an hour, explaining very carefully and taking a concern to a patient's perspective. And I should congratulate you for doing it and helping our patients or our clients to get through this very important topic, because every OPD we find so many people asking the same questions. What is a diet required? When can we do surgery? Can we avoid surgeries? I think anybody listening to this program will have a all-in-one perspective about very important topic, thyroid nodule. So we want to preserve the thyroid. That is my last comment from that side. Whenever we possibly want to preserve the thyroid, because thyroid is the energy powerhouse of the cell. So if you want to remove it, then only we want to do it. As Dr. Chitresh has told, experience counts a lot. Who has done the maximum volume surgery, who has done the maximum way of surgery, not just the cosmetic problem. We should be very, very careful about all these structures in the neck. I think you can also see the January editions where we talked about what a surgeon usually does. There is a one video also how they have done it. So I think these are all public initiatives which the ITS will continue to take over under the vision of Dr. Sashank Joshi sir. So next episode, I promise, will be a new topic and we'll have a new perspective, and we'll keep on giving you a lot of new ideas what thyroid does, and we want to take your feedback. You can write into us on endocrineawareness@gmail.com, and I would urge all the doctors out there to please become ITS members.
because Indian Thyroid Society has been established under the visionary leader Dr. R.V. Jayakumar sir, who is the founder president, and we have had so many years of research. We have got a flagship journal, which is the Thyroid Research Practice (TRP), which is really available on the website. So I again thank you all. Digital team, very good. I think they have done a seamless transmission across. We are also available on YouTube. You can subscribe to our YouTube channel for getting live updates. So namaste. Thank you. Thank Good you, night. sir. Thank Thank you, you. sir.